Assalamualaikum. Here is Bakir Ismail in front of you from Islamabad School Ji Khan. This is lecture number 5 of General Science of class 8. Let's have a quick recap of the last 4 lecture which I delivered to you. We discussed about the chemical change generally called as reaction, in which we discussed that this is actually the change in the composition and nature of the reactants as compared to that of the nature and the composition of the products. For example, we discussed that whatever the nature and change of the reactants is the product which is formed as a result of the reaction, the nature and composition of that product is different from that of the reactant from which it is formed. Famous example from my side was that of water, which is made up by hydrogen and oxygen, and we discussed that hydrogen and oxygen has different nature and composition as compared to that of water. Now we have already discussed about the elements, that these are the basically the pure substances having same atom, and by same atom I make it clear that what I mean that uh, the same number of protons and electrons inside the same number of protons and electrons in that particular atoms of that specific element. Yes, and by atomic, by number of electrons or protons, we mean that it has atomic number. So in simple words, we can say that every atom of a particular element has same atomic number. Now we already discussed that this is not further simplified. We cannot simplify element into more simpler substances, and each element have specific symbol to represent. For example, if we are talking about hydrogen, we have symbol H, capital H, and if we are talking about helium, we have symbol He. Now we already discussed that what is compound. We know that compound is made up of two or more than two elements if they are combined chemically. If they are combined chemically, means they have to change the nature and composition. But there is another very important point, that this has been done in fixed ratio. This is not on our own will, that what is the fraction of each element or what is the percentage of each element. It has been already decided that the ratio of the elements from which the compound is formed is already fixed. Now, today our main lecture is about chemical formula. I correlate the two things together, uh, i- like that. Element is represented by symbols. Similarly, compound is represented by formula. जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया कि हमारे पास एलिमेंट्स के जैसे सिंबल्स होते हैं, तो कंपाउंड्स जैसे हमारे पास क्या होते हैं, फार्मूलाज भी होते हैं. सो क्या होते हैं फार्मूला? फार्मूला इज़ बेसिकली द शॉर्टकट या एब्रीवेशन ऑफ हमारे पास कंपाउंड होता है. लाइक वी हैव पी आई ए इज़ द एब्रीवेशन ऑफ पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस. यस, yes sir. और भी देर आर सो मैनी एब्रीवेशन विच वी यूज इन आवर डेली लाइफ. जैसे ISI है. व्हाट इज मीन बाय ISI? इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस. ठीक, इस तरह अक्सर आप न्यूज़ पे देखते होंगे DG ISPR आ जाता है. व्हाट इज़ द एब्रीवेशन ऑफ DG? इट इज़ यूज फॉर डायरेक्टर जनरल, एंड ISPR इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशन. यस. तो ये हमारे पास क्या होते हैं, ये बेसिकली हमारे पास शॉर्टकट नेम होते हैं किसी भी बड़े बड़े उसके लिए, चीज़ के लिए. तो इसी तरह हमारे पास क्या होते हैं कि कंपाउंड होते हैं. तो कंपाउंड जैसे हमारे पास वाटर है, साल्ट है, शुगर है और इस तरह के हैं, तो उनके हमारे पास क्या होते हैं, एक फार्मूला होते हैं और वो उसको रिप्रेजेंट करते हैं. बजाय अब इसके आप वाटर लिखें, यू कैन राइट इज H2O. H2O इज व्हाट? इट इज़ बेसिकली द फार्मूला ऑफ वाटर. जैसे साल्ट है, तो साल्ट के लिए हम क्या कर देते हैं, NaCl. NaCl क्या है? बेसिकली ये फार्मूला है हमारे पास साल्ट के लिए. तो व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ फार्मूला? At least we have two main advantages of writing formula. For example, if you are writing water, so you didn't guess about which type of elements are used to make water and what is their ratio.
आपको ये अंदाज़ा नहीं होगा कि एलिमेंट्स कौन कौन से इस्तेमाल हुए हैं, और ये भी पता नहीं चलेगा कि इनकी आपस में रेशो क्या रही है। Similarly, if I write sugar or salt, by writing sugar or salt, I didn't guess about, even you didn't guess about which type of elements, how many elements are present, and what is the ratio of their combination. तो ये अंदाज़ा लगाना बड़ा मुश्किल होता है। तो but when we write formula, तो we can guess easily which elements are used to make this compound, or and what is their ratio। ठीक है, तो देखें लिखा हुआ इंफॉर्मेशन अबाउट नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन्वॉल्व, कि कौन कौन से इसमें एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं और तादाद में कितने हैं, एंड नंबर ऑफ़ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको अभी हम डिस्कस करेंगे। देखें आपके सामने एग्जांपल में क्या दिया गया, वाटर दिया गया। अब हमारे पास वाटर में हमारे पास क्या, देखिए फार्मूला H2O। सो इट इज़ वेरी क्लियर फ्रॉम दिस फार्मूला that we have two elements, means H and O। H stands for hydrogen and O stands for oxygen। ये तो हमें पहले पता चल गया कि इसमें हमारे पास दो एलिमेंट्स हैं, एक हाइड्रोजन है और एक हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन आ रहा है। और दूसरा हमारे पास ये भी क्लियर है कि इन दिस स्पेसिफिक कंपाउंड वाटर, two hydrogen combined with one atom of oxygen. Two hydrogen atoms combined with one atom of oxygen. Similarly, we have another example of carbon dioxide. By if we are writing carbon dioxide, we can't guess that, even we can guess that there are two elements, carbon and oxygen, which is used to make carbon dioxide, but we didn't get idea about the number of atoms. So by writing CO2, we can easily identify that one carbon atom combined with two oxygen atoms and form carbon dioxide. Now how to represent reaction? अभी देखें ना कि हम ये कहते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना देते हैं, वाटर बना देते हैं। देखिए अभी ये क्वेश्चन होगा कि इसको हम लिखते कैसे हैं। So it is represented by chemical equation. Yes, a chemical change or reaction is represented by chemical equation. There are three parts of a chemical equation. One is the arrow. Yes, one is the major part which differentiate the reactant and products is your arrow. Arrow differentiate reactants and products. Yes, on your left side you have to write reactants, and on the right hand side of the arrow you have to write the products. Yes, जैसे कि आप देख रहे हैं कि we have reactants on our left hand side, and and at the middle we have an arrow, and at the right hand side we have to write the products। like हमारे पास देखें जैसे लिखा हुआ है हाइड्रोजन combines with oxygen। yes, so hydrogen and oxygen are the reactants, and this is separated by an arrow, and we have to write H2O on the right hand side, so H2O is our product। now we have another very important term, ये जो अभी आप यहाँ पे सीखेंगे। देखें ये एक आपकी किताब में भी रिएक्शन लिखा हुआ है कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बनाती है, MgO बना देती है। अब यहाँ पे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन हमारे पास क्या होंगे, रिएक्टेंट्स होंगे, और क्या बना रहे हैं हमारे पास, मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी ये हमारे पास प्रोडक्ट है। तो इनफैक्ट अगर आप पिछली रेंज में भी देखें तो आपको ग्रीन कलर में दो नंबर नज़र आ रहे हैं, एक हाइड्रोजन के साथ 2 लिखा हुआ है और एक वाटर के साथ 2 लिखा हुआ है। सो व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू राइट दीज नंबर, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हम नंबर क्यों लिखते हैं। वी हैव टू ड्रा और मेक अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, जिसमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स, ये जो एटम्स होते हैं, ठीक है, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के जो एटम्स होते हैं, इनकी तादाद को हमने क्या करना होता है, सेम लिखना होता है। अगर आप देखें तो यहाँ पर Mg+O2 गैस, अब नॉर्मली हम O2 Cl2 N2 इस तरह H2 की शक्ल में लिखते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिखते हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्म क्या होता है ये आगे चल कर कभी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, मैग्नीशियम का देखें एक एलिमेंट है, एक एटम है, और दूसरी तरफ आप देखें मैग्नीशियम ऑक्साइड में मैग्नीशियम का एक एटम है। लेकिन आप देखें ऑक्सीजन के हमारे पास कितने एटम्स हैं, 2 एटम्स हैं जी। और राइट हैंड साइड पे देखें तो मैग्नीशियम ऑक्साइड में ऑक्सीजन का एक एटम है। तो यहाँ ये समझ आ गई है हमें कि हमारे पास ऑक्सीजन की लेफ्ट हैंड साइड पे 2 एटम्स हैं और राइट हैंड साइड पे एक एटम है। सो वी हैव टू बैलेंस देम। तो बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, हम दूसरी तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो वी हैव 2 मैग्नीशियम अलॉन्ग विथ 2 ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया,
लेकिन मसला किस पे आ गया, मैग्नीशियम पे, कि पहले मैग्नीशियम बैलेंस सेम थे, ऑक्सीजन सेम नहीं थे, अब ऑक्सीजन सेम हो गया, मैग्नीशियम सेम नहीं रहे, तो वी हैव टू मल्टीप्लाई 2 विद मैग्नीशियम ऑन लेफ्ट हैंड साइड। ना अब आप इसको चेक करें तो आपके पास 2 मैग्नीशियम है और 2 ही मैग्नीशियम राइट हैंड साइड पे है। लेफ्ट हैंड साइड पे अगर ऑक्सीजन आपके पास 2 हैं तो राइट हैंड साइड पे भी हमारे पास मैग्नीशियम हमारे पास 2 हैं। दिस इज कॉल्ड एज बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो मेरे बच्चों, आज हमने क्या डिस्कस किया है, वी हैव डिस्कस दैट कि हमारे पास क्या होता है, केमिकल फार्मूला होता है। जैसे कि एलिमेंट को सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे ही हम क्या करते हैं, एक कंपाउंड को केमिकल फार्मूला से ज़ाहिर करते हैं। केमिकल फार्मूला से हमें क्या मिलता है, हमें ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं और उनकी रेशो क्या है। और फिर हमने ये पढ़ा है कि केमिकल रिएक्शन को किस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है। तो केमिकल रिएक्शन को इक्वेशन के जरिए से रिप्रेजेंट करते हैं, इसमें हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पर रिएक्शंस होते हैं, राइट हैंड साइड पे प्रोडक्ट्स होते हैं, और इसको हम एरो से क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं या सेपरेट करते हैं। और बैलेंस किस लिए करते हैं, ताकि जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में एटम्स इन्वॉल्व हैं उनकी तादाद दोनों तरफ सेम रहे, यानी लेफ्ट हैंड साइड पे राइट हैंड साइड पे सेम रहे। इसके लिए हम क्या करते हैं, जो न्यूमेरिकल नंबर है 2 3 4 5, उससे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं और उनको बैलेंस करते हैं। दिस इज़ कॉल्ड एज बैलेंस केमिकल इक्वेशन। कल ज़िंदगी रही, इसी पर इंशाल्लाह ताला हम अगला लेक्चर लेंगे। थैंक यू, अपना ख्याल रखेंगे।